Hi everyone, I am Prateek, the founder and CEO of Skill in a Box, and आज हमारे साथ हैं ऋत्विक, who heads a fashion designing program at Skill in a Box. And आज हम बात करेंगे जो भी नई चीजें Skill in a Box में आ रही हैं, and हमारी women learners कैसे perform कर रही हैं और क्या garments बना रही हैं. So ऋत्विक, क्या चल रहा है, क्या नया आ रहा है? मतलब हम Instagram पे काफी देख रहे हैं, but ये हम आजकल ज्यादा देख रहे हैं कोई मास्टर क्लास आ रही है. Yes, so we have come up with this idea of masterclass where we're gonna invite everybody, not just our students, everybody, हर कोई जो भी हमारी masterclass में participate करना चाहता है, and it's basically a one and a half hour session जहाँ पे we interact, we learn, we create, and we see the power of fashion. Because fashion is a very big industry with a lot of different things and ideas and streams. So basically, small sessions for everybody to get together and just have fun and learn. Sweet. तो ये पहली मास्टर क्लास होने कौन सी वाली है? जैसे आपने बोला कि there are going to be so many sessions. What is this first master class which we're going to do? So our coming masterclass on 19th of January is going to be about illustrations, fashion illustrations. And do you know what fashion illustrations are? Drawing, I believe, designing garments. So this is why we have our master classes, because fashion illustration basically is, of course, it is drawing, but it is not just drawing. Fashion illustration, I would say, is a medium for a designer जिसके थ्रू वो अपने आइडियाज को स्ट्रीमलाइन कर सकते हैं, प्लानिंग मैपिंग कर सकते हैं. बिकॉज जब हम किसी फैब्रिक को देखते हैं या कुछ, वी आर जस्ट सिटिंग अराउंड थिंकिंग, वी कीप गेटिंग दीज आइडियाज कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है. एंड बहुत बार सिंस वी आर स्टार्टिंग स्मॉल, ऑल ऑफ आवर डिजाइनर्स दे आर जस्ट स्टार्टिंग, वी कैन नॉट टेक द रिस्क कि हम फैब्रिक लें, काट कूट के बना दें. इन दी एंड इफ वी आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, देन दैट इज अ वेस्ट ऑफ एफर्ट एंड capital, of course. So fashion illustration basically helps us map the design कि जो हमारे दिमाग में है वो बनने के बाद कैसा लगेगा. Like we have two of our in-house illustrations here. Wow. So basically this is what an illustration does कि if I have an idea in my mind कि वो color palette, वो design, वो elements सब combine होके the end result कैसा होने वाला है, that is what a fashion illustration is. Okay, so you basically sum it up. जो आप गारमेंट्स यहाँ पे देख रहे हैं, इनकी पहले एक डिजाइन बनी होगी, Yes. हमारे लर्नर ने बनाई होगी, एंड उसके बाद ये गारमेंट्स बनाए होंगे. Exactly. तो ये किसके गारमेंट्स हैं? तो वी हैव सपना, जो हमारी हिमाचल से लर्नर है, उनका कलेक्शन यहाँ पे, जो कि अभी हमारे पास पोर्टफोलियो शूट के लिए आया है. Before you move ahead, I would really like to know कि सपना जी जो हिमाचल में है वो सोलन से हैं, I guess. हाँ जी. And how old is सपना जी? So सपना जी is in her late 40s and सपना जी को हमेशा से फैशन डिजाइनिंग करनी थी. फ्रॉम basically she wanted to pursue fashion in her college years, but उस टाइम to what she has told us, उस टाइम उनके पेरेंट्स ने अलाउ नहीं करा कि वो दिल्ली आए और दिल्ली आके फैशन की पढ़ाई करें, किसी इंस्टीट्यूट में आए. एंड देन to her surprise she was married to a family who was having a business in fashion. सपना जी के फादर इन लॉ अपना बुटीक चलाते हैं. तो आई वुड से इट वाज डेस्टिनी कि सपना की लाइफ में फैशन वापस आना था. And Sapna ji was very hesitant in the beginning of her, newly married life. Then she had kids. Then, of course, she couldn't instantly get into the business. But finally, after around 15 years of her marriage, she decided that if she has the opportunity, she has to take it. And then she got to know about us, which was another very big plus point for her. Because अब उन्हें दिल्ली नहीं आना था पढ़ने के लिए. Yes. दिल्ली उनके पास गया था, सोलन. So she enrolled with Skill in a Box Fashion. She has completed her program. She is now a government certified fashion designer, and her first collection is here. See the collection, and this all has been done in just 4.5 months of training, I believe. Yes. Right? And I mean, can you take out this other garment? No, this the second one. Yes. हाँ. So this garment का जो illustration design थी, ये सपना जी ने पहले बनाई होगी, उसके बाद ये garment बनाया था. Exactly. And is this handwork, the golden things and these? Yes. All of this is hand done. So any of these garments what she's made in a collection in the 4.5 month of program, अभी कोई बिका है? हाँ जी. So out of 4 garments that she has made, one of them has already been sold. Wow.
without even being launched. अभी तक वो हमारे Instagram पे launch भी नहीं हुआ है. Just through stories, it was this piece right here. Wow. This. And this is also all handwork, right? Yes. The silver editions. So ये printed organza fabric था जिसके ऊपर सपना जी ने हाथ से पूरा ये silver का accents दिया to create the Accents. hedge. Yes, nice. And how much did she earn from this approximately? So her costing for this garment was around 1800 and we have sold it for 4500, Wow. which is a very good start, I would say. Yes. Congratulations for Sapna as well, but you as well. I think you did a very good and hard job in the 4.5 months so that ये आ सकते ऐसी designs आ सकती थी बाहर. And all of this actually happened, of course, because of Ritwik and Sapna ji's hard work, but because she could actually master illustration. Correct? True. Yes. So इसी के लिए I think illustration is probably one of the very important factors of fashion designing and ये बहुत ज़रूरी होता है किसी भी fashion designer के life में. And that is why everybody should join the illustration free masterclass happening on the 19th of January at 4 p.m. Fill out your details in this link below and we will be seeing you at the masterclass where Ritwik himself is taking this masterclass. Absolutely. I would love to have all of you to share the experience and the journey that we have had with our students. I think, of course, जब हमने program start किया था, everybody has doubts कि क्या हम सही कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, and how it is, if it is creating the impact that we aim for or not. And I think training के 9th month में when we get to fashion illustrations, when we saw the change. Yes. Because we will put pictures here for you guys to see. जो फर्स्ट इलस्ट्रेशन हमारे लर्नर्स ने क्रिएट करी थी और जो उनका फाइनल सबमिशन था, देयर वाज दिस मैसिव इम्प्रूवमेंट एंड चेंज एंड आई थिंक दैट इज व्हेन वी फेल्ट कि यस ये वी हैव क्रिएटेड समथिंग हियर एंड आई थिंक इट वाज दैट मोमेंट फॉर देम आल्सो दैट दे रियलाइज कि हाँ ये सिर्फ आइडियाज नहीं है, ये आइडियाज अब मेरा फ्यूचर बनने वाले हैं. Yes. It gave them the confidence and the vision I think that they required. अगर 4.5 और 7 महीने के बीच में अगर कोई भी एक नॉन फैशन डिजाइनर ऐसे इलस्ट्रेशंस बना के ऐसे गारमेंट्स बना के पैसे कमा सकते हैं, then I think that was our vision and I think we've at least we're very close to it and we've achieved it as well. तो ज्वाइन करिए स्किल इन अ बॉक्स की फ्री मास्टर क्लास फैशन इलस्ट्रेशन पे जनवरी 19th शाम 4 बजे.